assembly. It is the place where representatives discuss issues, debate ideas, and shape the policies that guide our democracy. Through dialogue and accountability, the Parliament ensures that every voice is heard and every decision is made with responsibility. In this mock session, we want to show how discussion happen in the Parliament. It will help to understand how different views are shared, debated, and then brought together before a law is finally passed. Thank you. Honorable members, the House will now take up the Media Regulation and Accountability Bill 2024 for consideration and passing. This bill comprises of the rules and regulations that are to be followed by the media. I request all the members to maintain order. Minister, please move the bill. Honorable Speaker Ma'am, respected members of this House, I rise today not merely as a representative, but as a guardian of the constitutional responsibility entrusted to this Parliament. The responsibility to modernize and safeguard the nation's communication framework. For decades, India's broadcasting landscape has operated on structures that no longer reflect the speed, scale, and sensitivity of today's digital environment. The world has advanced. Our regulatory architecture must advance with it. This bill, Broadcasting Services Regulation Bill 2024, does not emerge from impulse. It stands on necessity, legal precision, and institutional foresight. It affirms a fundamental doctrine. Influence demands accountability, reach demands responsibility, and digital power demands regulation rooted in public interest. What we introduce today is not control, but coherence. Not censorship, but standards. Not restrictions, but robust safeguards. And let this House recognize an essential principle of modern governance. High impact voices require higher responsibility. While emerging creators must retain unhindered freedom, this legislation protects citizens, preserves credibility, and prepares India's communication ecosystem for the future. With convince and clarity, I present this bill to the wisdom of this august House. Madam Speaker, the limitations in the Broadcasting Services Regulation Bill are valid because they protect viewers, especially children, from harmful or inappropriate content. Without clear rules, harmful, violent, or misleading content can spread very easily. These limitations make sure that OTT platforms, TV channels, and influencers follow proper age ratings, content warnings, and responsible behavior. The bill also controls fake news and misleading advertisements, which protects viewers from being confused or cheated. Last but not the least, it safeguards our cultural values and national security by stopping content that can harm society. Firstly, limitations are essential to protect the privacy and dignity of individuals. Every human being has the right to their personal life, but without guidelines, media can turn into a 24/7 surveillance camera, exposing people's private tragedies for public entertainment. Secondly, limitations stop sensationalism. Not every news story requires shouting anchors, dramatic sound effects, or exaggerated claims. Legal restrictions are necessary. Media cannot publish content that threatens national security or exposes state secrets. Law often allows government to block or censor reporting that endangers the nation. Media outlets are restricted from publishing false statements that harm reputation. Media cannot unlawfully invade personal privacy, publish confidential information, or expose public details without a strong public interest justification. We just want clean content, age protection, and fake news control from media. Madam Speaker of the Assembly, this bill is concerned with the removal of fake and disharmonious content from all media platforms.
The bill states that any program or channel likely to promote disharmony or feelings of hatred or ill will between different religious, racial, linguistic, or regional groups, castes, or communities, all are likely to disturb public tranquility, can be prohibited by order. This content may be fabricated and false, and may turn society to chaos. So, the government should be allowed to prohibit the transmission of the program or the operation of the broadcaster or the broadcasting network by citing public interest or national security reasons. Freedom of speech is a fundamental right, but in every democracy, it comes with reasonable restrictions so that one person's freedom doesn't harm another's safety, dignity, or peace. The motion has been moved. The House shall now proceed with the second reading for discussion on the bill. Members wishing to speak may please rise. I request the House to allow a healthy and constructive debate. Good morning, Honorable Speaker Ma'am. I rise to strongly oppose the bill presented by other side, the Broadcasting Service Regulation Bill 2025, a bill that claims to regulate, but in reality it controls and commands the media of this country. We all agree that media is the mirror of the society, but the bill they propose will turn that mirror into a polished government-approved a surface that hides every crack, every flaw, every injustice that we as a citizen deserve to see. A society that cannot speak its own truth can never reform. A media जिसे force किया जा रहा है behave करने के लिए वो कभी आजाद नहीं हो सकता. Firstly, Honorable Speaker, this bill gives excess power in the hands of the government. If the government is the final judge of what is right, wrong, decent, indecent, in good taste or in bad taste, then it will give unlimited power for censorship. If the media exposes corruption, if it questions authority, if it starts reflecting people's pain, the government can simply declare it against public order and silence it. This is not regulation, this is control. So my question to the reading party is that people say the Broadcasting Service Bill 2025 is not just regulating media, but giving too much power to the government. What do you say to that? Honorable Madam Speaker, the opposition party claims that the bill hands excessive power to the government, but that's just an exaggeration. Regulation का मतलब control नहीं होता है. I accept the fact that press freedom is indeed very important, but freedom doesn't mean zero responsibility. Media democracy का mirror है और mirror की cleaning को censorship नहीं बोलते. ये बिल मीडिया की आवाज को दबाता नहीं है, बस इंश्योर करता है कि मीडिया से जो आवाज निकले वो फैक्चुअल और अकाउंटेबल हो. ये बिल स्टैंडर्ड सेट करता है सो दैट कंटेंट स्टेज एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट. अगर हर ओवरसाइट को पावर ग्रैब बोल दिया जाएगा तो ऐसे तो बेसिक रूल्स भी डिक्टेटोरियल लगने लगेंगे. Objection. Some people feel. Objection. Some people feel the Broadcasting Bill 2025 may reduce press freedom और जो छोटे OTT platforms and content creators हैं वो डर जाएंगे और अपने profession को छोड़ने पे आ जाएंगे. But you address this concern. As I mentioned earlier, press freedom is indeed very important, but freedom doesn't mean zero responsibility. मीडिया डेमोक्रेसी का मिरर है और मिरर की क्लीनिंग को सेंसरशिप नहीं बोल सकते. और रही बात छोटे क्रिएटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, तो ये बिल सबके लिए इक्वली अप्लाई होता है एंड छोटे मीडिया हाउसेस को और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पहले वार्निंग दी जाएगी बिफोर अप्लाइंग अ वेरी हेवी अमाउंट ऑफ पेनल्टी. सो दिस बिल safeguards the rights of every citizen and it is under the constitution and follow every fundamental right of every citizen. Honorable Speaker Madam and respected members, I wish to oppose the opinion of that media is the mirror of society. Media reflects values and norms. I equally agree that media shapes and manipulate public opinion, but in the context of data privacy, we see that media, it brings the information of the powerful rather than being accountable. We are talking about right to privacy. Your bill looks good on paper, but not in reality. The government can see everything without our consent. आपका बिल आपके पेपर में अच्छा लगता है, रियलिटी में अच्छा नहीं लगता है. वो हमारी कौन सा
डरते हैं, they do not want to invest. Rather than I also want to say कि कोई वॉचडॉग नहीं है, इसके अलावा आप टैक्स चार्जेस करते हैं, आप पेनल्टीज लेते हैं और उसको एक पनिशमेंट बोलते हैं। आप बोलते हैं कि आप वेलफेयर के लिए काम करते हैं, बट आई डोंट सी एनी वेलफेयर एट ऑल। यू प्रोवाइड 4 महीने का मनी योजना, कॉलिंग इट अ सो कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, लेकिन ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। फिर आप पास करना चाहते हैं खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए, करप्शन आप करते हैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए। एम्प्लॉयमेंट नजर नहीं आता लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट नजर आता है। सच्चाई दिखाना चाहते नहीं और कहते हो मीडिया इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। माय क्वेश्चन टू रूलिंग पार्टी इज does some people believe the broadcasting bill 2024 could affect the citizens' right, especially freedom of expression? How do you respond to it? Honorable Speaker Madam, the bill does not take away citizens' freedom of expression. Its aim is to make sure information is shared responsibly and safely. कॉमन पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही इसका मेन फोकस है, टेक अवे करना नहीं। सो द बिल ट्राइज टू बैलेंस फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Critics, members, please maintain order. Critics say this bill might allow the government to interfere with what citizens can watch or say. Does this bill limit citizens' right to anyway? Honorable Speaker Madam, the bill does not decide what citizens can or cannot watch. It only ensures harmful or false content is handled properly. ये बिल लोगों की राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन। द पर्पस इज सेफ्टी नॉट कंट्रोल। ऑब्जेक्शन स्पीकर मैम, पास्ट में इमरजेंसी 1975 के टाइम मीडिया को कंट्रोल किया गया था। मुझे आप ये बताइए इस बिल में क्या गारंटी है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा? ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस वायलेट हो रहा है ना। इमरजेंसी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी, इसलिए क्लियर गाइडलाइंस हैं, चेक्स एंड बैलेंस हैं, मिसयूज के लिए लीगल रेमेडीज अवेलेबल होगा। गाइडलाइंस और लीगल रेमेडी तब काम आते हैं जब पावर मिसयूज हो जाने के बाद एक्शन लिया जाए। बिल को मिसयूज प्रूफ बनाना जरूरी है और इसका डिजाइन अभी भी वेग है। मिसयूज को स्टॉप करना प्रिवेंशन से होता है, रेमेडी से नहीं। There are preventions. Rules are open, reviewable, and can be questioned in court, higher committees. So the fairness is still protected. आप रिव्यू की बात कर रहे हैं? रिव्यू का प्रोसेस तो स्लो होता है, तब तक तो मीडिया न्यूज़ दबा चुकी होती है, पब्लिक को सच तो दिखता ही नहीं माय डियर। Members are requested to maintain decorum. Honorable Speaker Madam, our job is to balance industry flexibility with national safety. That's why we included consultation clause, review boards and appeals mechanism. Honorable Speaker Madam, instead of regulating media, you should strengthen media literacy. Rather than passing laws that restrict media, the focus should be on teaching people to analyze news critically, fighting misinformation through education, encouraging independent journalism. Regulation alone cannot fix media problem, our informed society can. My question is, मीडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जुडिशरी कंट्रोल नहीं कर सकता है। इफ यू से दिस इज रेगुलेटिंग मीडिया, तो फिर ये क्या है? इंस्टेड ऑफ तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है? इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम, इट इज कंट्रोलिंग इट। Honorable Speaker Ma'am, the opposition is trying to claim that the media is being controlled by the government, the judiciary, or any authority that has any relation to do with the government. But that's a false accusation. In reality, the bill doesn't give control to anyone. Media अपना content खुद decide करता है, और ये guidelines बस safety और awareness के लिए है. It aims at responsibility, not to take away anyone's freedom. ऑब्जेक्शन स्पीकर मैम, अगर मीडिया इंडिपेंडेंट है तो फिर बिल का इंप्रेशन ऐसा क्यों देता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करता है ना कि रेगुलेट करता है? Most of the control stays in the hands of the media bodies. Government से final appeal stage पर आता है. That too with clear limits, rules and regulations that have been set by the IPC
Indian Penal Code, ICAP, the POCSO guidelines, and the SC guidelines. Independence stays intact while a basic structure is added. Objection, Madam Speaker. According to this bill, the creator will now be categorized as digital news broadcaster. They must inform to the Ministry of Information and Broadcasting about their work and existence. My question to the ruling party is this: how this bill will protect privacy when it allows authorities to demand user data directly from the platform? And how will small creators and student creators will be able to pay heavy compliances and penalties? Or this bill is only favoring big companies? Honorable Speaker Madam, the bill only targets harmful, abusive and dangerous content और जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. It adds clear rules for reporting unsafe material ताकि स्टूडेंट्स को timely protection मिले by enforcing responsibility on platform. The bill creates a safer digital environment for young users. Madam Speaker, it will create a fear, and fear is the biggest enemy of free speech. People will be afraid to express anything freely because they will fear the punishment and removal of content. Honorable Speaker Madam, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बिल है वो सीरियस वायलेशंस पे फोकस करता है, स्मॉल एरर्स पे नहीं. A minor slip won't trigger heavy action. पहले वार्निंग मिलेगी, पेनल्टी नहीं. The aim is to guide creators, not to scare them. This will obviously create the fear because you are the one who this bill is giving power to remove the content, to demand the data, to punish the creators. You are the one to decide what is fake, what is harmful, and what should stay online. It is a control, madam, not a regulation. The intention is not to restrict creativity. Rules target harmful or misleading content. Only normal creators को protect नहीं किया जाएगा. With clearer guidelines, creators actually get more confidence, not less. मैडम स्पीकर, अगर यही अभिव्यक्ति की आजादी है तो शायद अगला कदम बोलने पर पासपोर्ट लगाना होगा. Government alone referee नहीं होता है. Independent regulatory bodies होती है, retired judges, media, experts, ethical panels. ये सब referee का part होते हैं. Multi-stakeholder model को ensure करते हैं कि game fair हो, bias नहीं. Honorable Speaker Madam, I oppose right of citizens that this bill violates. This bill attacks the core of Article 19(1)(a), freedom of speech. When government decided what is decent, Article 19(1)(g) guarantees the right of profession. This bill destroys livelihood of small journalists, OTT creators and regional media. By forcing censorship, the bill violates Article 21, our right to choice, liberty and privacy. Our democracy is built on citizens' right to information. This bill restricts the right by controlling what the media can show. TRP या corporate pressure को दूर करने के नाम पे political propaganda को बढ़ावा दिया जा रहा है. याद रहिए. Objection, Madam Speaker. The bill does not stop citizens from expressing their views. It only targets harmful or misleading content. Article 19, Section 1A की protection बिल्कुल safe है. The bill works within constitutional limits. It's responsibility and not restriction. Secondly, the bill does not block access to information. ये सिर्फ ensure करता है कि जो भी information मिले वो safe, clear और responsible हो. It actually supports the right to information by reducing fake content that can harm society. Thirdly, the bill has a proper system of checks, appeals and fair hearings. किसी पर भी action लेने का scope बहुत कम है because every step is recorded and reviewable. Article 21 की rights fully respected है. Honorable Speaker Ma'am, social media sites should filter out fake news stories. The right to privacy is more important than the freedom of the press. The media is responsible for lowering the level of public debate. The rise of social media improved or harmed human communication and social interaction. सरकार मीडिया पर कंट्रोल करेगी? कंट्रोल कौन कर रहा है? Government.
या फेक न्यूज फैक्ट्रीज या फेक न्यूज सिंडिकेट्स। अगर हम रेगुलेशंस नहीं लगाएंगे तो फेक न्यूज हमारे देश का सरकार बन जाएगा और ये नेशनल सिक्योरिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। ऑब्जेक्शन स्पीकर मैडम, अभी तक तो आप लोगों ने सारा पॉइंट्स क्लियर कर दिया, पर एक पॉइंट अभी भी बचा हुआ है, करप्शन। Members, please don't interrupt. फ्री मीडिया तो करप्शन का दुश्मन होता है और कंट्रोल मीडिया करप्शन का दोस्त। अगर मीडिया की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी तो भ्रष्टाचार को खुला लाइसेंस मिल जाएगा। सच की आवाज को दबाने का हर प्रयास डेमोक्रेसी पर हमला होता है। Objection, Madam Speaker. The bill is not about hiding anything. It puts clear rules in places, so misuse of the media can't be happen. अगर system transparent हो, तो corruption छुप ही नहीं सकता. So the goal is to stop corruption, not hide it. ऑब्जेक्शन स्पीकर मैडम, मीडिया की आवाज को कंट्रोल करके आप करप्शन कैसे रोक सकते हैं? Corruption stops through transparency, not control. ये बिल मीडिया की आवाज को नहीं रोकता, ये बस बेसिक रूल सेट करते हैं जिसमें मिसयूज ना हो। फ्री मीडिया और क्लियर गाइडेंस को मिलाते हैं तो हम लोग का करप्शन कम होता है, लेस करप्शन होता है। ऑब्जेक्शन स्पीकर मैडम, प्लीज मेंटेन ऑर्डर। जहां मीडिया फ्री नहीं होती है वहां पर चाहे जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, डेमोक्रेसी वीक पड़ ही जाती है। मीडिया को कंट्रोल करके करप्शन रोकना है, करप्शन को छुपाना है। Objection, Madam Speaker. The opposition claims that the bill is undemocratic. However, most of the Indians support this bill. Almost 69% of the Indians support this bill. Democracy is the government of people. Most of the people support this bill. Are you questioning the opinion of the people? ऑब्जेक्शन स्पीकर मैडम, अगर गवर्नमेंट ही मीडिया कंट्रोल करेगी तो फिर मीडिया करप्शन का किस पर एक्सपोज करेगी? गवर्नमेंट की करप्शन इंडिपेंडेंट बॉडीज और ऑर्गन से जो गवर्नमेंट की करप्शन को दिखाएगी। बाय द वे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रहा मीडिया को, गवर्नमेंट जो है वो बस हार्मफुल मिसलीडिंग कंटेंट हटा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो मिसलीडिंग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और अभी के सिटीजंस वो सबको देख के उसको रियल समझ लेते हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट बस वो सब मिसलीडिंग कंटेंट को हटा रहा है ताकि वो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। और अगर बात करें कि करप्शन कौन दिखाएगा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का करप्शन दिखाने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडीज है वो सब दिखा सकते हैं। और अगर किसी सिटीजन या किसी को भी लगता है कि गवर्नमेंट अपना पावर का मिसयूज कर रहा है तो दे कैन गो एंड फाइल केस इन द सुप्रीम कोर्ट। दे आर रेडी, द सुप्रीम कोर्ट इज फुली एक्सेसिबल एंड यू कैन फाइल केस इन दैट एंड यू कैन गेट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग। ऑब्जेक्शन स्पीकर मैडम, गवर्नमेंट को मीडिया को कंट्रोल नहीं, मीडिया को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, तभी करप्शन रुक सकता है। आप चाहे जितना भी जस्टिफाई कर लो, पर रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब हमेशा इंफॉर्मेशन का कंट्रोल होना। Honorable Speaker Madam, it clearly कहता है कि no action can be taken for expressing opinions, criticism or questioning authority. Restrictions if misinformation, hate content, child safety, violations or national security leaks तक limited है. Press freedom protected है, misuse restricted. Madam Speaker, if national security is the concern, then the solution is to target actual threats like terrorists, bots, hacking networks, not to monitor every citizen. We can do this by improving cyber security, improve fact-checking the bodies, and enforce a strong data protection laws without censoring people. This bill mixes security with control, and that's why we oppose it. And most importantly, let the courts approve takedowns, not a government-controlled council. आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, लेकिन आप फेक टेरर अटैक से जो मास पैनिक कॉज होता है जिससे हजारों लोगों की जान जाती है, उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्लॉज बताने चाहेंगे अपने तरफ से, इफ यू अपोज द बिल सो स्ट्रांगली? ऑब्जेक्शन मैडम स्पीकर, मीडिया में लिमिट्स लगाने के बहुत तरह
other alternatives हैं. We are not opposing regulation. We are opposing over regulation. Without restrictions, how do we prevent media from creating unnecessary panic during terror attacks and threats? That was my question. Please answer my question. Discussion is concluded. We should proceed with the third reading. Now the voting takes place. Those who are in favor of the bill say ayes, and those who are against the bill say no. Ayes! Majority of the members said ayes, so the bill is passed in this house and moved to the second house. The House stands adjourned to meet at the next scheduled sitting. I request the members to stand up for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जगत मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Assembly adjourned.